what will happen with electric field inside the matter, right? So that we have to discuss. You will find it very interesting. So now it is electric field in matter. Okay. So you know that we can divide matter in categories, like one is conductor, where you have infinite supply of charge, and another one is dielectric. Dielectric essentially means insulator, where you have very limited amount of free charge, almost no free charge. Okay. So these are the two categories. So here in conductor, what is there? Infinite supply of charge, and you have infinite supply of charge. And second point is that field inside the conductor is zero. Third point is that you have like one or two free electrons, one electron or two free electrons per atom. You know about the valency thing. So you have one or two electrons per atom. But in the case of dielectric, situation is different. When you put a dielectric into an electric field, so what will happen? There will be a charge separation. Positive charge will be pushed towards the field and negative charge will go opposite to the field. And hence a dipole moment will be developed inside the matter. Okay. So in that case, what will happen? You will develop a dipole moment which will be at linear stage, which will be proportional to the electric field. And hence, when I remove this proportionality constant, I will get a quantity alpha, which is called, what is alpha called? Polarizability of the medium. So it is polarizability. Polarizability. Okay. So this will actually tell, alpha will tell that how much the medium is disrupted by electric field. If medium remains unaffected by electric field, then alpha will be very less. But if there is substantial disruption, substantial change in the medium, then the alpha will be more. So if you see different substances, you will see different kind of alpha. Okay. So what I wanted to tell you regarding the induced dipole thing, that if you see an atom is like this. You have a positive center and then the negative cloud, and overall these are the negative clouds of electrons. Okay. So overall atom is neutral. But when we put this in electric field, what will happen? This will get distorted. The positive charge, so the center of positive charge will be shifted little bit in the right hand side. And in this case, the center of negative charge is at the center of positive charge. So overall, you can see electrical neutrality. But here what will happen when you apply an electric field, the positive charge will be shifted little bit towards right, and the center of negative charge which was over the positive charge will be shifted towards the left, and they will be separated at say some small distance 2d. And suppose this charge is delta plus, this charge is delta negative, so you can see a dipole moment being developed. Yes or no? So a dipole is developed.
So how much this separation will happen and how much the charge will be there, how much dipole moment will be developed, that all will depend on different kind of substances, right? But this is what is happening at the level of when you apply an electric field to the atom. तो ये बात समझ आ रही? So when you apply an electric field to a dielectric, so you get so these are called induced dipoles, because when you apply the electric field, these dipoles are created. So they are called induced dipoles. And we call, I have taken the linear stage, e to the power 1. So because if the value of field is higher, this will depend on e square also, that is called non-linearity, okay? But at this stage, because power is 1, I will call such materials as linear dielectrics. Linear dielectrics. I will call such materials as linear dielectrics. Okay? Where the dipole moment is depending on first power of electric field. And there is also a quantity called polarization. Polarization. So polarization is defined as capital P, and that will be equal to small p per unit volume. So what is the dipole moment that is developed per unit volume? So this is a better way to recognize how much the dipoles are developed, because larger volume will have large number of dipoles. So we must divide it with respect to volume to get a sense of how many dipoles are developed in the dielectric material. Correct? Sir, This is both P capital और small polarization. sorry. सर मतलब हमने जो कैपिटल P और स्मॉल p को डिनोट किया है, these are polarization. What is small p? I think dipole moment. Fair. So that is dipole moment. And what is capital P? Sir, capital P polarization. It is dipole moment per unit volume. Volume. So ये ज्यादा अच्छी क्वांटिटी है बताने के लिए ना कि कितने डाइपोल्स प्रोड्यूस हुए हैं. हाँ जी सर. Why you see per unit of something? Per When we unit would is very important ना to know. जैसे वर्क है, वर्क के बाद पावर डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि पर यूनिट टाइम वर्क कितना हुआ ये जानने के लिए, राइट? तो जब yes, पर यूनिट आप डिफाइन करते हो तो आपको पता चलेगा किस लेवल पे पोलराइजेशन हुआ है. ओके? ओके सर. जैसे मान लो, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो P इज इक्वल टू 5 यूनिट डेवलप हुआ है इन वॉल्यूम 6. हाँ, और हाँ P इज जी. इक्वल टू 6 यूनिट डेवलप हुआ है इन वॉल्यूम 4. तो कैसे पता लगाओगे किसमें ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है? आई मीन किसमें ज्यादा डिसरप्शन हुआ है? तो आप कैपिटल P लिखोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 5/6, और यहाँ पे जब कैपिटल P लिखोगे तो आ जाएगा 6/4. 4. तो क्लियरली इस सिस्टम में ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है. ओके? ओके सर. एक बार क्लियर है आपको? व्हाट इज योर नेम? शिवानी. हाँ शिवानी, क्लियर है? दिस इज क्लियर? हाँ जी सर. हाँ जी सर. तो टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ मच डिसरप्शन हैज हैपेंड, इन विच केस इट इज मोर, वी डिफाइन इट लाइक दिस. अदरवाइज पता चला ज्यादा वॉल्यूम में थोड़े से डाइपोल. आर यू गेटिंग इट? भाई सपोज बहुत ज्यादा वॉल्यूम यूज करके, सपोज 100 वॉल्यूम यूज करके 3 डाइपोल डेवलप्ड हुए. हम्म? हाँ जी सर. और 1 डाइपोल डेवलप हुआ है 50 वॉल्यूम यूज करके. तो इफ यू आर नॉट सीइंग दिस, आपको क्या लगेगा? 3 वाला ज्यादा 3 है. वाला. बट इट इज हैज टेकन 100 यूनिट वॉल्यूम. ओके? सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज हाँ जी. इंपॉर्टेंट. यस? ओके सर. अरे, like I can explain you in terms of money also. Like if I tell you that I earn 5,000 rupees, is that a is that complete information? no, sir.
भाई पर आवर, पर सेकंड, पर मंथ, पर ईयर, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अनटिल अनलेस Yes. ये नहीं पता चलेगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि व्हाट टाइप ऑफ अर्निंग आई एम मेकिंग। यस और नो? Yes, sir. ओके। सो मैटर के अंदर एक क्रूड कैलकुलेशन अगर करें, सो कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. So let us now do a crude calculation inside matter. And at initial stage, let me take it as a simple sphere. So suppose there is sphere and P is proportional to alpha, P is proportional to E, and P is equal to alpha E. This was our calculation, right? And what is alpha? It is equal to P by E. If I just make a very crude calculation, so I will put dipole moment. Suppose it was like this, charge Q was here, minus Q was here, and D was here. So charge separation was like this. So dipole moment will be Q into D, right? Hmm? Bolo bhai, is it okay? Yes, sir. And because of the charge, electric field will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q by D square. Yes? Yes, sir. Q and Q will cancel. It will become 4 pi epsilon naught D cube. So this is the value of alpha, 4 pi epsilon naught D cube. And because this will be coming again and again, we can just put it in units of, we can define a new alpha by 4 pi epsilon naught, because this will be coming every time. So it will be only D cube. So I can define some alpha dash, which is not the same dimension as polarizability. Sorry, polarization. Alpha dash will have dimension of meter cube. So alpha dash will have dimension of, bata bhai, L cube. And alpha will have dimension of epsilon naught into L cube. Is that okay? So it's better to use this unit na, alpha by 4 pi epsilon naught. जब भी exactly alpha की जरूरत होगी, you will multiply it by 4 pi epsilon naught. Otherwise, there is no need of always writing, because epsilon naught has got some value like this, 8.85 into 10 to the power minus 12, right? In SI units. So why to take this number again and again? हमने So, एल क्यूब और एप्सिलॉन एल क्यूब ये क्यों लिखा है? क्या? अल्फा डैश इज इक्वल टू एल क्यूब, ये जो लिखा है हमने, ये कहाँ से लिखा है सर? आप बताओ कहाँ से लिखा है? इसके बगल में थोड़ा देखो, ये क्या लिखा हुआ है? सर अल्फा बाय 4 No, no, पाई no. एप्सिलॉन नॉट Alpha dash is equal to what is written? डी क्यूब. D cube. So what is D? ओके सर, डिस्टेंस को दिया. Distance. So distance is length in ओके dimension ओके सर. analysis. So distance is equal to what? If you want to write dimensional formula for distance, it will be length. Okay. Yes. ओके सर. So this was just a rough calculation to show how
what will be the dimensionality of alpha and how we write it as a unit. But now let us try to calculate it for some simple models. So can I erase this? Yes. Yes, sir. Now please see this. If I take your crude model of an atom, so what happens in the atom? It is like this. Atom is like this, and there is plus q charge sitting at the center, and negative q charge is spread throughout. So this will carry negative q charge. It is like this. When the electric field is 0, the centers will coincide. Okay. Now what happens that when we apply electric field, what will happen when we apply electric field? The positive charge will be shifted. So you will have something like this, positive charge getting shifted. So this is suppose plus q charge. It will be shifted like this, and now we don't have electric field is equal to 0. There is a non-zero electric field applied like this. Okay. So we have a non-zero electric value of electric field, and this is shifted like this. And please understand what will happen. There is a force on this, So center को minus charge आएगा ना? which so negative charge is filled throughout this. Okay. So it is shifted like this. So that means QE charge has pushed it. QE force has pushed it. But at the same time, the negative charge filled in this will be applying a force in this direction. It will try to bring it back to the center. Can you imagine that? And when both will balance, so if you see plus Q charge, it will be feeling a force in this direction QE, and at the same time, it will feel a force which is QEE due to electrons, due to electron cloud. And when they will balance, it will be at equilibrium. So right now it has stopped moving. Otherwise, it will keep moving in this direction until unless it will achieve a force equilibrium. So here it is a force equilibrium. Force equilibrium, right? So I can write that it will be balanced by external field. Then only this force equilibrium will happen. And I can write the value of uh, electric field as I can use this electron cloud density to write the external field because both are equal. So electric field will be equal to, what is the field inside? You remember? 1 upon 4 pi epsilon naught QR by R cube by radius cube. So let us take this radius to be small a. So QR by A cube. This is the field inside a charged sphere. This is also written as rho r by 3 epsilon naught if you remember. ये तो बहुत ही सिंपल बात है, ये सिंपल चीजें नहीं पता है तो फिर कैसे अप्लाई करोगे? अगर कोई चार्ज स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी इज रो, so what is field inside? You remember ना? This type of graph comes, it is linear inside and then falls like this. In between. Okay? Yes, Neha? Video is lagging. Uh, क्या पता चल रहा है भाई? कोई कुछ कह रहा है?
सर बोल रही है बहुत ब्लर हो गया है। Everyone is saying video is lagging. तो मेरा हो रहा है क्या? नहीं, नो मेरे साइड से तो नहीं है. ओके, अपने साइड से चेक करो. क्या नाम है आपका? शर्मा? नयन? Yes, sir, now clear. आई थिंक आपके साइड से प्रॉब्लम है, थोड़ा देखो. So this is the formula. So what I should write is that field is equal to, it is displayed suppose by distance d. So it will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught qd by aq. So if you write it as qd is equal to 4 pi epsilon naught aq, then p will be equal to 4 pi epsilon naught aq, and you get the calculation of alpha is equal to 4 pi epsilon naught by this model. to a cube भी Sir, Q is equal to 4 pi epsilon naught A cube E ना. A cube E. Sorry. So it will become, P will become 4 pi epsilon naught A cube into E. So compare it by P is equal to alpha. You will get P is equal to 4 pi epsilon naught A cube. Clear है? So you see just what you have understood. According to that, I have calculated. And the, if you, for example, calculate it for hydrogen atom, and let us write alpha dash, which is alpha by 4 pi epsilon naught into A cube. So we know what is the radius of hydrogen atom in the ground state. You remember? 0.529. So what is radius of hydrogen atom? 0.529 angstrom, right? So it will become this angstrom cube. Okay. So it will come out to be 0.148 into 10 raised to the power minus 30 and meter cube. Meter cube. So don't forget that this is not alpha. This is some alpha dash. If you want alpha, you will have to multiply it by 4 pi epsilon, 4 pi epsilon naught. Okay. ठीक है ना? हाँ जी सर. And you can put it in terms of volume also. You can see we can write it in terms of volume also. How we can write it in terms of volume? Because alpha dash is a cube, or alpha. If I say what is alpha? Alpha is 4 pi epsilon naught a cube. So just 4 by 3, just multiplied by 3 and divided by 3. So it will become 4 by 3 pi a cube. So it will become 3 epsilon naught into capital V, where V is volume. This V is volume. So this is
crude model, classical model, and you calculate this. Is that okay? Sir, Yes. सर ये जो प्लस क्यू चार्ज सेंटर से शिफ्ट हुआ है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। अदरवाइज तो ऐसे था, यस यहाँ पे फील्ड 0 है, एक्सटर्नल फील्ड। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है सर, ये जो प्लस क्यू चार्ज शिफ्ट हुआ है तो सर नेगेटिव चार्ज सेंटर पे होगा या सरफेस पे? नेगेटिव इन चार्ज तो पूरे बल्क में था ना, जिसका सेंटर यहाँ था। यस तो अगर आप नेगेटिव चार्ज का सेंटर वहीं भी मान लो, एट द यस सेम, सर सब पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो suppose I यस consider it here itself, then also you can make the crude calculation. हाँ, ओके सर। सर डेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज की है वो चेंज हो जाएगी ना सर, पॉजिटिव चार्ज जब शिफ्ट होगा तो? so आप ये कह रहे हो कि रो जो है उसकी प्रोफाइल बदल जाएगी, but we are considering it to be uniform because what I ओके am taking here, Q rho, रो this rho I am taking to be constant. ओके सर So this is a very simple model just to uh, ये जो कैलकुलेशन है ना, इससे सिर्फ ये पता चल गया कि किस ऑर्डर के का एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है। सो अल्फा इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। सो रफली इस टाइप की होती है। ओके, एंड व्हेन यू अप्लाई क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस, कैन आई रेज दिस? So what you are saying is that charge density should not be constant, and that is absolutely correct. अभी ये कौन बोल रहा था? सर हाँ, नयन नयन. That is यस सर absolutely right that charge density should not be constant, right? So for that, if यस I सर take quantum distribution, if I take quantum mechanical treatment and I take the charge density not to be uniform, but given by the ground state wave function, using ground state wave function, you will read in quantum mechanics. Suppose I take it like this. This is the charge density, suppose. Okay. So you can say it is not uniform. Such type of charge distribution exists using quantum mechanics. You can find out. And when you put this and calculate the polarizability, then you find that alpha is equal to 3 pi epsilon naught AQ into E. This is the value of alpha. So this is quantum mechanical treatment. So you have this, then you will apply Gauss theorem, right? How you will calculate the field? You will apply Gauss theorem, E dot dA is equal to integral rho d tau, which is Q enclosed upon epsilon naught. You will make this calculation at a distance small r, which you will take eventually small a, small d. So this is the difference between the classical treatment and quantum mechanical treatment. Classical treatment
will give you a very crude value of alpha, but this is the value using quantum mechanics. And here also you will have to make one approximation that the distance that you have taken is much less than a. I mean, like this was your atom and this is the distance r where you are calculating the electric field, and this is the radius of the atom, so r must be very small, otherwise the expressions will be very big and you will not be able to calculate. तो याद रखोगे ये चीज? क्लासिकल मॉडल से क्या आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से 3 pi epsilon naught a cube. 3 pi epsilon naught a cube. And sometimes they give you that the charge density varies like this. They give you like this. And tell me on what value of this electric field will depend. Are you understanding the question? This is the charge density, and tell me the dipole moment will depend on what power of electric field. So how you will go about it? You will write closed integral E dot dA is equal to 1 by epsilon naught integral rho d tau. Correct? And then you will calculate the value of dipole moment. Let us do it quickly. So in this case, what will happen? Electric field E into 4 pi r square will be equal to 1 by epsilon naught and integral rho is kr and d tau is 4 pi r square dr. Let us consider it from 0 to r. Then what will happen? Calculate. E will become a r square by 4 pi epsilon. Calculate it quickly. Do this integral. If I consider it to be that equilibrium distance, so E will be 4 a d square by 4 epsilon naught. So coming to this, you want P, so you want charge. Here what you want? You want charge, you want dipole moment. So write E is equal to a q square d square by 4 pi epsilon naught q square. Qd is P, so 4 epsilon naught q square by a is equal to P square and into E. So P is equal to P is proportional to e to the power half. So what is the value of n? Half. समझ आई बात?
Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So this was for some random distribution. If it is given, we can calculate the value. Okay. Now let us do a question. Please write, consider a charge Q that is brought at a distance small r should I write it? Consider a charge Q that is brought at a distance r from the center of a neutral atom such that a dipole is induced in the atom. Find electric field at a distance r due to this dipole value of dipole moment induced force on Q due to this dipole. Okay. Read the question carefully first of all. The first thing, good thing is to read the question. अगर आप अच्छे से क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कैन कॉम्प्रीहेंड इट करेक्टली, half of the problem is solved. Okay. So consider a charge Q that is brought at a distance small r from the center of a neutral atom. So this is a neutral atom. This is its center. And from this at a point P, what is this distance given? R. Hmm? What is this distance given? Small r. Check from the question, Aditya. Small r. Small r. So this is neutral atom. Here, as soon as you put charge Q, what will happen? So this positive charge will be pushed this side and negative charge will be pushed this side. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir.
So consider a charge q that is brought at a distance r from the center of a neutral atom such that a dipole is induced in the atom. Find the electric field. So as you do this, please understand some positive charge will be pushed. I can take the center of that positive charge as this. Yes, just to show you. So positive charge will be pushed this side and negative charge will be pushed this side. So like positive, positive, positive will be here, negative, negative, negative will be here. Yes or no? So that's why a dipole moment will be created in this direction. This is small p and this is the dipole moment that is created. Correct? So dipole moment is always directed from, suppose this is positive charge, this is negative charge. So it is always directed from negative to positive. That you remember? This is the dipole moment. So now what is the situation? If I write this, situation is this. This is positive charge. This is negative charge. And some radius is given of this neutral atom. No radius is given, that is okay. So there will be a dipole moment like this, P, that is coming because of this Q charge. And from this center, there is a distance R where this Q charge is kept. यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पहले पूछ लो. First of all, ask the story up to here. देखो, I want everybody to understand everything. हमेशा इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट भी I keep on discussing. ठीक है? सर जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की पॉइंट हमने यहाँ रखे हैं तो उनकी पोजीशन अगर चेंज हो जाएगी तो डाइपोल मतलब क्यू चार्ज की तरफ हो जाएगा जहाँ हमने बी पॉइंट रखा हुआ है. सॉरी, क्वेश्चन में आपका नहीं समझा. ये क्यू चार्ज लेकर हम आए हैं. जी सर. इसकी अगर वजह हमने से इसका पॉजिटिव चार्ज इधर पुश हो गया है और नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो गया है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस. अदरवाइज दिस वाज अ न्यूट्रल एटम. ओके सर. तो बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज क्यू, सो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. मतलब वो यहाँ 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 हर जगह आएगा, बट आई एम टेकिंग इट एज अ सेंटर. आई एम टेकिंग इट हियर. ओके. ओके सर. And I say similarly, the positive charge will be pushed here and I am taking it here. So a dipole moment will be formed, which will be from negative to positive. That dipole moment is P. What is your question? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने डाइपोल की जो डायरेक्शन है हमने आपने अभी बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है तो अगर नहीं, ये ये इस बताया तरफ था, ये आपको पहले नहीं पता? नहीं पता है सर बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को इस तरफ कर दें जहाँ पर हमने चार्ज रखा हुआ है तो कोई इफेक्ट होगा? किसकी डायरेक्शन को? सर जो हमने नेगेटिव डायरेक्शन एक तरफ लिया और पॉजिटिव इस तरफ अगर वो चार्ज अगर हम पॉजिटिव उस तरफ लें तो कोई इफेक्ट ये होगा चार्ज उसमें? कहाँ भेजूं बताओ? सर ये हमने बाहर की तरफ लिया हुआ है. हम्म ये तो यहाँ लाके रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस आर. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन पढ़ा? हाँ जी सर. पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन. आप इस चार्ज को तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कहाँ रखना है. ओके सर. देखो, एक चीज सबसे पहले सब लोग ये बात ध्यान रखो कि whenever a question is asked, read the question and follow the instructions of the question. उस समय आप अपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करो कि अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए. ऑल दैट वी कैन डिस्कस, बट डोंट डू दैट. बिकॉज पहले तो आपकी ये कैपेबिलिटी डेवलप हो कि जो क्वेश्चन दिया है उसको कॉम्प्रीहेंड करके क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं. वो एबिलिटी अगर आपकी डेवलप हो जाएगी तो नेक्स्ट लेवल आप, वैसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ती ये सोचने की कि क्वेश्चन फ्रेम करने की जरूरत पड़े, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके. सो यू कैन
just try to read the question, what is given in the question, and try to comprehend that. Okay. ओके सर। तो क्वेश्चन भाई एटम न्यूट्रल है, क्वेश्चन में दिया है। आर डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। सो अब हम क्या करना चाहते हैं बताओ? इफ यू विल पुट दिस चार्ज हियर, नेगेटिव विल बी कम हियर, पॉजिटिव विल कम हियर। इफ यू पुट क्यू चार्ज हियर, तो दैट डज नॉट मैटर ना, बिकॉज ये तो स्फेरिकल है एटम, जहां भी रखोगे उसके अपोजिट चला जाएगा। ओके। ओके सर। And I will always encourage you to improve the quality of the question that you ask, because जैसे जैसे आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इंप्रूव होगा, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में सोचना आपने शुरू कर दिया। सो हाँ, आई वाज आस्किंग कि सिस्टम से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब प्लीज सी, दिस इज अ डाइपोल and I want to write electric field here. Yes, because this dipole is created, I can write electric field. The first question is what? Electric field at distance r due to the dipole. So electric field at P they want. What is the formula? You remember? P by, bolo, 4 pi epsilon naught r square 2 cos theta आर r cap सर आर क्यूब नहीं था? dipole, हाँ r cube, sorry, dipole is r cube, 2 cos theta r cap plus sin theta theta cap. ओके See, field will be, for charge it is r square, and for dipole it is r cube, for quadrupole it is r to the power 4, right? So please see, this is the dipole and this is the point. So this is the r cap. So it will become P by 4 pi epsilon naught r cube 2 cos, what is the angle? R cap, पाई it is pi. And this will become 0. So this will become minus 2p by 4 pi epsilon naught r cube into r cap, or put minus here, minus r cap. This is the field on the axis of the dipole, axial field. So if you want to check field here, it will be going in this direction, and which is so obvious because negative charge is here. So field will be going towards the negative charge. So this is so obvious, the negative sign is so obvious, right? Second is, so first A part is done. A part is done. So second is calculate the P induced. P induced. So let us calculate P induced. So P is equal to how much? 4 pi epsilon naught. So what is the field that is applied? ये भी देखना होगा. Let us calculate the field applied, E external, and then we can calculate the dipole moment. Okay. So what is the field applied? फील्ड ऑफ डिस्चार्ज है। So 1 what is the upon external field on this atom? 1 So upon इसको हटा दूं, ये ठीक है, समझ आ गया? Can I erase Yes. this? What is the field applied on the, so E external
is how much? Because of this charge, 1/4 pi epsilon naught q by r square. This is the field. Okay. So what is P? P is equal to alpha into E, which is 1/4 pi epsilon naught q by r square. So this is the dipole moment. सर अल्फा क्वेश्चन में गिवन है क्या? Alpha is the polarizability of the atom, Which is constant, वो गिवन होना which is चाहिए ना. some constant. Okay. Something which we don't know, but we can take it alpha. ठीक है? ओके सर. So B part हो गया. And the most easy one is the force. So can I erase this also? सर my video stuck. सर अल्फा का क्या वैल्यू आपने बताया? नहीं, कोई वैल्यू नहीं. I have just put alpha. If it is given in the question that alpha, take the classical model alpha, so you can put it here. Okay sir. You can put here what? 3 epsilon naught V ना? Classically कितना आया था? You see? 3 epsilon naught V आया था. हाँ, so you can put it if it is given in the question, or just if given that it is alpha, so keep alpha here. Okay. So the C part. See, what is force on this? It's very easy, bhai. Force is Q into Electric field in What was electric field here? Q into, tell me. P by 4 pi epsilon naught 2p by na? By r cube. And put force here. So r cap is this side. So it will be attracted here, na? So put minus r cap. ठीक है? So this is the O. This is r cap direction. So it will be attracted towards this, see, negative charge. It will be attracted towards this. So it will be minus r cap. तो ये देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन आपने कर लिया. कोई डाउट है तो you can ask. Sir, We have calculated the value of P also, na? Sir. So 2Q by 4 pi epsilon naught. What was P that we calculated? Alpha into 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. Q by R square. So I have written 2Q here, this here, value of P here, and into 1 by R cube into minus R cap. So you can see here that force is proportional to 1/r to the power 5. हाँ जी, अब बताइए. सर यहाँ पूरे सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए दो साइड. तो उसमें से हमने नेगेटिव चार्ज सेंटर पे कंसीडर किया है. अगर ये चार्ज हमने मतलब ये नेगेटिव चार्ज एट अ डिस्टेंस आर जो हमने से कंसीडर किया है पॉजिटिव नेगेटिव एक ओरिएंट. मतलब आवाज कट रही है आपकी. उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी है, तो जस्ट आपको बताने के लिए किया है. लेकिन सर ये हमने कहीं अलग डायरेक्शन में कंसीडर अगर किया ना तो थीटा चेंज हो जाएगा ना, हम पाई नहीं ले सकेंगे. क्योंकि देखो जैसे मेरा मान लो क्वेश्चन भी उस टाइम यही था. पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ.
बट आपको नहीं सब दिख रहा है, वो मैं आपको सेंटर ऑफ पॉइंट के थ्रू मैंने उसको यहां बना दिया, अदरवाइज इट विल बी लाइक दिस, ऐसे डेवलप होगा, ठीक है। यस सर। तो अब डाइपोल मोमेंट्स मान लो ये वाला ऐसे डेवलप हुआ, ये ऐसे डेवलप हुआ, ये ऐसे डेवलप हुआ, ये ऐसे डेवलप हुआ, ये ऐसे, तो नेट तो इधर ही होगा हाँ यस सर। भाई। इस पूरे के बदले तुम यहाँ पे एक प्लस चार्ज ले लो और इस पूरे के बदले यहाँ पे एक माइनस चार्ज ले लो, वही तो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की। दैट विल बी द ओनली डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। So these यस small dipole that are created, they will constitute net dipole moment in this direction. Bhai, I am not calculating the magnitude of the dipole. I am just taking it as P. But thing is that if this is one dipole, this is another 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 dipole. So what is the net dipole moment? In which direction it will be there? So I have just made it like this. I have just put positive here and negative here, and this is the dipole moment. Then tell me. यस सर, गॉट इट। सर Hmm. सर लाइक अभी इंड्यूस हो गया ये, दिस हैज इंड्यूस्ड टू द सारा सरफेस पे हो गया, नेगेटिव एक साइड एंड पॉजिटिव, और मतलब कि ऑलवेज ये सरफेस पे ही इंड्यूस होगा सारे का, मतलब लेस ये देन चार्ज नेगेटिव लगेगा, सेपरेशन की पॉजिटिव बात है। टू नेगेटिव। सरफेस देखो, इट इज जस्ट कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है। जैसे चार्ज क्या था कि यहाँ पे तुमने जैसे ही पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, यस तो सर। बिकॉज ऑफ द इंडक्शन द नेगेटिव चार्ज विल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज देयर एज अ न्यूट्रल एटम, यस सो दिस यू आर कंसीडरिंग, अदरवाइज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड वही शिफ्ट करता है, पॉजिटिव तो ऑलमोस्ट सेम जगह पे रहता है, ओके। यस सर। बट just to understand, you just make this model that suppose what is happening, that negative charge is coming here, positive charge, because you want a dipole moment P only, यस यस सर। that's it. बिकॉज मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो जो पी है उस पे मतलब सेपरेशन पे भी तो डिपेंड कर रही है ना, तो पॉजिटिव बट और P के अंदर तुम जा कहाँ रहे हो, तुम तो जस्ट उसको P लिख दे रहे हो भाई। P किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल P का कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हो। नहीं, अगर मतलब करनी पड़े तो वो तो चीज है नहीं कि कर सकते ना, क्योंकि वो हर डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। तो बाद में तुमने कितना सिंपल मॉडल ले लिया, P इज इक्वल टू अल्फा ई करके लिख दिया, अल्फा में चली गई वो सब कॉम्प्लेक्सिटी। ओके सर। इतना ही कैलकुलेट कर लो, बहुत बड़ी बात है। ये जो क्वेश्चन है ये तो ये आसान थोड़ा ना है, पूरी सारी बातें समझना और करना। ये सब पूछा जा चुका है कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा इस केस में, आर टू द पावर 2, आर टू द पावर 3, आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 5। ओके भाई, यू शुड अंडरस्टैंड कि आप किस एक्सटेंट का कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अगर चार्जेस दिए हुए हैं, उनके लोकेशंस दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट पी आई आर आई, कौन सी बड़ी बात है। बट उसके लिए वो दिया तो होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ओके देखो, किया सब कुछ जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि किस प्रॉब्लम में क्या क्या लेवल आपको पूछा जा सकता है। रिसर्च प्रॉब्लम थोड़ा ना करना है कि आप अपने मन से लेना शुरू करोगे कि ऐसा ऐसा होगा। भाई देयर इज अ सेट क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन दिया गया, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू मेक द सिस्टम, देन यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अभी क्लियर है। यस सर। तो ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया भाई। अल्टीमेटली आई वांट कि इस एटम के बदले एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा जो कि ऐसा होगा, बस इतने की जरूरत थी मुझे। मैं चाहूं तो कुछ भी ना बनाऊं। अगर मैं चार्ज यहां रख रहा हूं, देखो, आई कैन मेक इट लाइक दिस,
if I am putting charge Q here, in next step, there will be a dipole which is created like this, P, and the charge is Q here. Just that's it. No need of making this charge and this. That was just to make you understand. If you don't, you are making that also complicated. Just put it like this. I could have told you like this, that dipole will be created in this direction, and this is the situation. Okay? Yes, sir. No other thing is required. All right. So now we have to understand that. So concept of bound charges. Concept of bound charges I have to tell. So like suppose you have a system like this, and some polarization has happened in this system. Polarization, and you know what is polarization? Some separation of charge, formation of dipoles and higher poles. That has happened. Suppose some dipoles are formed in this volume. So, and now forget about the cause of that. That means some external electric field is required for that. But let us forget about that right now. So what is happening is uh, that because of that polarization, you have an electric potential, right? Like in the previous case, a dipole is formed, so you can write potential because of that dipole. So because of this polarization, there is a potential that is formed. So I can consider that because of this polarization, some surface charge has appeared and some volume charge has appeared. Because if there is potential, that means there is some charge that has appeared in the volume. If you call this as a neutral, then no potential will be formed here. I mean, if there is no charge, no surface charge, no volume charge, nothing is there. So that means there will be no potential, right? But if some surface charge is formed and some volume charge is formed, and they are called bound charges. Bound charges means that uh, atom as a whole is neutral. So just कि आपने एक एक्सटर्नल फील्ड दी थी, उसकी वजह से कुछ चार्ज सेपरेशन हुआ, कुछ डिसरप्शन हुआ, जिसकी वजह से तुम मान सकते हो कि कोई सरफेस चार्ज प्रेजेंट है और कोई बाउंड चार्ज प्रेजेंट है, और तुम पोटेंशियल को अब किसके फॉर्म में लिख सकते हो? सम सरफेस चार्ज एंड सम वॉल्यूम चार्ज के फॉर्म में तुम लिख सकते हो पोटेंशियल को. एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस formation of this surface charges and bound charges? Polarization, right? So is it okay to interpret it like this? समझ रहे हैं सभी लोग? Yes, hello. Yes. Yes. Are you able to understand what I want to say? That you have some volume that is polarized, and now I can imagine that they are made up of some surface charges and some bound charges, and these surface and bound charges are responsible to give electric potential and hence electric field. And this sigma is surface charge density. Just put B to make it bound, to understand that it has been created because of the polarization. And rho is volume charge density that has been also created because of the polarization. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो पहले. सर Now फिर this, यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी से अलग और रो से अलग.
दोनों का contribution. So you can put it like this. That is a good question. So you can put it like this. This plus this. Now it is okay? Yes, sir. Because it is scalar quantity, na? So it will be simply added. Now sigma b can be shown mathematically. It can be calculated by P dot n. Jadatar they don't ask to calculate potential. They just ask what is sigma bound. And you know, once you know by what is potential? Potential is 1 upon 4 pi epsilon naught integral sigma dA by R or 1 upon 4 pi epsilon naught integral rho d tau by R. If both are present, you will add both of them. Yes or no? It is Q by R. So Q will be written as integral sigma dA or integral rho d tau. Bolo bhai, is it okay? So sigma bound is P dot n cap. N cap is the perpendicular unit vector on the surface. And rho bound is minus del dot capital P. So now see, you have written that ग्रिफिथ पेज मैंने जो दिया था उसमें सारे ग्रेडियंट कर्ल सब कुछ है. You have written that ना? I told you to write it in one page. Yes, sir. So from here you can see you must know to calculate the divergence in Cartesian, spherical polar and cylindrical. P अगर दे दिया जाए and please see if P is uniform, अगर P यूनिफॉर्म हो तो रो बी क्या हो जाएगा? जीरो. Because divergence लेते ही divergence is del dot del x del by del y del by del z. So if P is constant, that differentiation will make it zero. So if P is uniform, you will not get rho b. So these two things you must know to calculate. So please check in your copy. Are you having this del dot P thing or not? For all three coordinates. Yes or no? Tell me quickly. Have it, sir. Cartesian, I am giving it again right now. Check. Check everybody. देखो डाइवर्जेंस है तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में. यस. Yes, sir. Yes, sir. आदित्य. आदित्य. Yes, sir. Read it for in cylindrical coordinate divergence. Dot V is equal to Yes. 1 by S del Yes. upon SVS Del plus by del s. SVS SVS. Very good. plus 1 by S Yes. del V5 by del 5 And what is VS, V5, VZ?
आदित्य? तो वो तो उनके कंपोनेंट्स हो गए ना, Components. Very good, very good. They are the components. Understood now? Yes, sir. Very nice. So let us calculate. So can I erase this? ये note कर लिया दो सबने? Richa, can you read it for spherical polar? रिचा आप लॉगिन है? शिवेश यस सर। जरा स्फेरिकल पोलर के लिए डाइवर्जेंस ओके ओनली सर। फर्स्ट टर्म, रेडियल टर्म ओके सर। बोलो। एक मिनट सर। सर डाइवर्जेंस डेल टी अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल अरे टी अपॉन डेल थीटा। स्फेरिकल में डाइवर्जेंस अभी भेजा तो है मैंने, देखो और उससे। यस 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 सर डाइवर्जेंस 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर वी आर। बस बस, दिस इज द रेडियल पार्ट। ओके, यस सर। सबका स्क्रीनशॉट में मंगाऊंगा, अपनी सबकी कॉपी में ये पूरा पेज मैंने बोला था लिखा हुआ होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज revisit whenever it is required. Okay, Radhika, are you having it? लॉगिन करने के बाद क्या भाई सब लोग? राधिका, आर यू देयर? नो। कैलाश? Yes, कैलाश yes sir, yes sir. नोट किया हुआ है ये Sir, फोटो फोटो? हाँ तो सर लिखना रह गया है, तो ये नहीं, उसका फोटो चिपकाया हुआ है अपने उसमें? फोटो से चुका ना फोन में ही है सर, तो लिखा नहीं नहीं, है। फोन में कुछ नहीं होता है, उसको उस पे लिखो। ओके सर। ठीक है, सर डोंट रिलाई ऑन फोन की फोन में पड़ा हुआ है। सभी लोग अपनी कॉपी में अगर फोटो कॉपी करके लगाना है तो भी लगा सकते हो। ओके, चलो। So suppose there is a charged, uniformly polarized sphere. सर हम्म सर ये जो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी निकालेंगे हम वी के लिए, हम्म दिस वुड बी ये सेम आएगा बाउंड चार्जेस और जो हम मतलब पीछे डाइपोल का केस करके आए हैं तो जो। ये सपोज कोई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर। इसका पोलराइजेशन P है। यस सर, इसकी वजह से डाइपोल्स होंगे इसकी जैसे। वजह से जो पोटेंशियल है V, that will be equal to V potential due to sigma bound plus बाउंड। V potential due to rho bound. यस सर। There is no other way that you can calculate the potential otherwise. सर लाइक हमने किया है ना अभी वो वो तो बहुत ही इलेक्ट्रॉन। सिंपल, एक स्फेयर है, इतनी सारी सिमिट्री है, ये कैसा यस दिख रहा है आपको? देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म है ये। कैसा भी है। आई मीन, हाँ जी हाँ, यस in सही है principle you irregular। can write it like this. Okay, यस यस सर। in principle you can write it like this. Otherwise I will also be solving spherical systems only, because otherwise how will I will integrate, right? फिर ये न्यूमेरिकल टेक्निक्स में चला जाता है, कोडिंग करनी पड़ती है। ओके, बट प्रिंसिपल वाइज यही तरीका है कैलकुलेट करने का। ओके, ओके so I am asking you कि there is a sphere like this,
and P is the polarization. This is Z axis, X, Y, Z. So P is uniform polarization. So tell me, Parampreet, what is rho B? Sir, rho r square dr dito. Sir, rho dito. That is, sir, spherical polar में rho dito होगा अगर that is given rho. P bar आप is ध्यान ही uniform. नहीं दे रहे हो ना, यही तो बात है. फोकस जहां पे होना चाहिए वहां है ही नहीं. This is uniformly polarized Yes, sphere. So what will be rho bound? It will be minus del dot P bar, P, which is and uniform. because P is uniform, it will give 0. sir. B. What is sigma B? P dot r cap. Yes, Sachin. P dot n cap. So P dot n cap. So P is what? In the z cap direction. So it is P z cap dot n cap is r cap. Yes, sir. So it will become P cos theta. Yes or no? Yes, sir. Kind of interesting. Because n cap is what? Perpendicular to the surface. Always that will be r cap in this case. Yes? So this is homework today. सबका divergence तीनों coordinate system का आपको याद करना है. Because divergence नहीं पता है तो सब कुछ आते हुए भी रो भी कैसे निकालोगे बताओ? अगर P non uniform दे दिया गया कुछ, something is given, then how you will calculate del dot P? You can only calculate del dot P if you know how to write the divergence in all three coordinates. So first is very easy. Spherical and cylindrical थोड़ा ध्यान देना है. Okay? ठीक है? Yes, sir. बोलिए भाई. So if this is uniformly charged sphere, dipole moment is like this. Dipole moment इस direction में है. So that means what will happen? Positive charge you can think about here, negative you can think about here, right? Yes or no? Yes, sir. So field will inside will be in the lower direction. Field will be like this inside. देखो उसी concept से सब आ जाता है. If you think positive here, negative here, because dipole moment is this side. And outside, because positive is here, so outside it will be going like this, right? It will be entering like this from outside. Because here you have negative charge, here you have positive charge. So it will be going like this. This profile has been asked in 5 marks previous year net. So outside it is just like a dipole field, right? Outside there is a dipole and field is outside due to the dipole. But inside the field will be downward. That is very important to understand. So if you calculate it using because polarization is given and you know the charges. So if you calculate it, you will find that the field inside, it will be field inside कितनी होती है वैसे? Rho by
Rho r by 3 epsilon. Rho r by 3 epsilon naught. Yes. So if you calculate field inside, it will be minus P by 3 epsilon naught z cap. So it is minus z cap direction. And outside field is field like a dipole. What is the field due to dipole? बताओ भाई. P by 4 pi epsilon naught r cube. Tell me. 2 cos theta r cap plus sin theta theta cap. So this is the profile. This is when r is less than the radius. This is when r is greater than the radius. बस ये ध्यान रखना, rho r is replaced by capital P. See, rho into r is what? Charge by volume. Hello. Yes, sir. And r is the distance d. So it's kind of P by V. So it's kind of capital P. समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. So this is so beautiful problem in which a uniform sphere having polarization in the z cap direction, and you have written directly the electric field by your intuition. The direction I told you, the profile I told you, rho bound, sigma bound. Otherwise, you can derive it also. Okay. सर Yes. सर ये सेकंड वाला समझ में नहीं आया सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर? तो यहाँ पे देखो डाइपोल कैसा होता है. डाइपोल इज लाइक दिस. यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है. तो प्लस से तो निकलती हुई होंगी फील्ड लाइंस. ओके सर, यस. और माइनस में एंटर करती हुई होंगी, बट अंदर सिचुएशन अलग होगी. प्लस से निकलती हुई माइनस में एंटर करते हुई अपने आप नेगेटिव हो जाएगी. ओके. यस सर. इसीलिए वो जो मैं ये करता हूँ ना, प्लस लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ. अब आप लोग ये डिस्कस करने लगते हो कि यहाँ क्या हो रहा है. अरे यहाँ भी बना लो. लेकिन ये समझ डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा है कि व्हाट इज हैपनिंग. परमप्रीत समझ आया उसका क्या पर्पस है? यस सर. So this was your field. Because of that, now you will get different profiles to calculate. ये बहुत previous year question है, but before that I want you to learn the coordinates ताकि आप ये लिख सको in every coordinate. Okay, so every time we will have to calculate the rho bound and sigma bound. We can calculate that if I know the coordinate system. Okay, ठीक है. Yes. So now the charge is written in the form of, if I say rho, तो रो में दो पार्ट हो गए. पहले तो फ्री चार्ज हुआ करता था, अब एक और चार्ज आ गया. कौन सा? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज बाउंड चार्ज. अब इसी के आगे का डिस्कशन आगे करना होगा, बट आई वांट कि आप लोग ये वाला कोऑर्डिनेट वाला पार्ट फटाफट कर लो. ठीक है. तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रिवाइज कर लो, देन आई कैन सेंड यू सम क्वेश्चंस जो कि आप आराम से कर सकते हो. एनी डाउट? Okay, then we will meet again. Okay, Sir, in next I class. have a doubt in the previous year. Can I ask? हाँ तो सर एक क्वेश्चन था जिसमें स्फेरिकल बॉडी दी है, उसकी पोलराइजेशन दी हुई है k by r square r cap, और उसका वॉल्यूम बाउंड चार्ज निकालना था k by r square r cap. तो तो डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में लिख लो, बिकॉज नहीं डेल डॉट 1 by r स्क्वायर लिखोगे ना. हाँ जी सर, वो 4 पाई डेल क्यूब आएगा ना. हाँ,
तो सर बात सोल्यूशन में उसका जीरो दे रखा था, उन्होंने वो नहीं नहीं स्फेरिकल नहीं वाला नहीं कर नहीं दिया। नहीं नहीं, सॉल्यूशन में जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इफ ओरिजिन इज नॉट देयर देन इट इज जीरो। सर आंसर की में भी जीरो दे रखा था वॉल्यूम बाउंड चार्ज। देखो तुम प्रोफाइल बताओ जरा। K by सर R पोलराइजेशन square, ई बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो सर R square V bar में कैंसिल हो जाएगा ना सर। व्हाट? तो 1 by R square del by del R square V R होता है ना सर रेडियल में। नो नो, जस्ट वेट, व्हाट इज पी? सर के बाई आर स्क्वायर आर कैप। के बाय के इंटू आर आर कैप कैप बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। So if you calculate rho bound, it is minus del dot ठीक है। P. ठीक। Okay. हाँ जी सर। So that will be equal to minus डेल K and del dot आर कैप बाई आर स्क्वायर। R cap by R square. Now value of this is always zero if origin is not included, because it is diverging at R is equal to zero. हाँ जी सर। So this will be minus K 4 pi del cube R. सर मैं आपको सर वो बाद में ना क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा और उसके ऑप्शन भी। तो उसमें वॉल्यूम बाउंड चार्ज जीरो निकाल रखा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करके, और ऐसे अपना 4 पाई डेल क्यूब आर है। तो तुम सर भेज देना। वैसे इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? हाँ जी इसका सर। मतलब ये है कि जब तुम डाइवर्जेंस ऑफ 1/r² देखोगे, ठीक हाँ है, जी। तो ये हमेशा जीरो है अगर ओरिजिन के पास नहीं जा रहे हो। अगर ओरिजिन के पास जा रहे हो तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो देयर विल बी सम वैल्यू दैट यू विल गेट। हाँ जी सर ठीक है, अब आ गया। तो एक बार क्वेश्चन भेज देना, देख लूंगा। बट दिस इज व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ दिस। ये तो अलग से भी क्वेश्चन आ चुका है, डेल डॉट दिस इज इक्वल टू व्हाट। ओके, हाँ जी। दिस इज सेपरेट क्वेश्चन आल्सो, and you can check this on I will suggest you, एक बार आप लोगों के पास ग्रिफिथ है ना? हाँ जी सर। हम्म, यस सर। तो एक बार ग्रिफिथ में आ जाओ। आई डोंट नो पेज नंबर मैच करेगा कि नहीं, बट मेरे में है 63। ओके। तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ दिस निकालो, यू विल गेट ऑलवेज जीरो। हाँ इसमें जी पूरा सर। डिस्कशन भी है इस बात पे। सर बट जैसे ही आप ये इंक्लूड करोगे तो देखो आगे है, इट इज ऑन, ये देखो मैं भेज रहा हूं तुम्हें, चेक करो, चेक द व्हाट्सएप। हाँ जी सर हम्म, मिल गया सर। अगर ठीक है। जीरो इंक्लूडेड है तो जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो इंक्लूडेड है तो इट विल नॉट बी जीरो, ओरिजिन इज इंक्लूडेड। ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज लाइक दिस, दैट this charge density is like this. If you want to get the total charge, it will be integral rho b d tau, na? Huh? यस सर। So it will be uh, minus k 4 pi integral del cube r and d tau, right? So ये this will be बना। 1 यस सर। and this will be uh, माइनस 4 पाई के minus 4 पाई के 4 pi k। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि there is some negative charge sitting at the origin. Some negative charge is sitting at the origin. Okay?
जी सर। तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ ओरिजिन पे बैठा हुआ है तो उसकी वजह से अगर ओरिजिन पे देखना चाहोगे तो देयर विल बी अ डाइवर्जेंस। ओके। ठीक। हाँ जी।